welcome to my channel again, and today we are here with another book review, an amazing book, The Marshmallow Test by Walter Mischel. And it is amazing book, good read, and I hope you're gonna like it, what I like about this book. So basically आपको पता है Walter Mischel basically एक psychologist है, renowned psychologist है of our times, और उन्होंने इस बुक के अंदर हमें सिखाया है how to have self mastery on ourselves. So I wanted to know about it, and no doubt this book is amazing. It taught us a lot of techniques which we can apply, and we can have self-control, because as you know, self-control is the engine of success. Okay, so Walter Mischel ने basically 50 years पहले अपने colleagues के साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर नर्सरी के बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन बच्चों को सबको मार्शमैलो दिया, एक मार्शमैलो दिया, साथ आगे एक छोटी सी बेल रख दी और कहा कि अगर आपने मार्शमैलो अभी खाना है तो आप खा लो, अगर आप 20 मिनट्स के बाद वेट करके खाते हो तो यू विल गेट 2 मार्शमैलोस. सो एंड ये कहकर वो सारे कुलीग्स और वॉल्टर चले गए उस रूम से, एंड दे वर सीक्रेटली लुकिंग एट इट, ऑब्जर्विंग द किड्स कि बच्चे क्या करेंगे. सो द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज दैट कुछ बच्चों ने जल्दी से बेल बजाई और मार्शमैलो खा लिया, कुछ बच्चों ने 20 मिनट्स वेट किया. हाँ, फैसिनेटिंग. एज ग्रुप एक, हर चीज़ थी, लेकिन चॉइस डिफरेंट. ओके, फिर उन्होंने क्या किया कि फिर वो आकर फिर इसके बाद उन्होंने उन्हीं बच्चों को ओवर द इयर्स एग्जामिन किया. ओके, सो द किड्स एंड जो उनके रिसर्चर्स थे उन्होंने इसको कहा कि लो डिले एंड हाई डिले, उन्होंने उसको ऐसे नेम किया अबाउट द रिसर्च. फिर उन्होंने एक और काम किया कि ओवर द इयर्स उन्होंने बच्चों को फॉलो अप किया और उनके आफ्टर लाइक 10 to 12 ईयर्स के बाद उन बच्चों के सैट स्कोर्स देखे. और द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वाज दैट कि जिन बच्चों ने मार्शमैलो एक लिया था उनके सैट स्कोर्स वर एक्चुअली बीन प्रिडिक्टेड थ्रू दैट, जो उन्होंने एक्शन किया था इट सिंक्ड टुगेदर कि उनके वहाँ सैट स्कोर ओके थे, और जिन्होंने 20 मिनट्स वेट किया था उनके सैट स्कोर वो मच बेटर. सो उसके बाद उन्होंने फिर भी वो बड़ा एक फैसिनेटिंग था कि हाउ इट्स सिंकिंग. सो दिस फर्दर स्टडीड आफ्टर लाइक 27 to 32 ईयर्स तक उन्होंने ईयर ओल्ड तक जब ये बच्चे पहुंच गए उनको दोबारा से असेस किया, और इस बार उन्होंने ये नोट किया कि द हाई एंड द डिले वेट जो एबिलिटी बच्चों की थी, इट प्रिडिक्टेड देयर बॉडी मास इंडेक्स एट द एज 30 years, and it also predicted the brain scans at 50 years related to addiction and obesity. How fascinating, just from a simple test कैसे चीज़ें सिंक कर रही होती हैं. अब वही बात है ना, एक आदत चीज़ आप वही चीज़ आगे लेके जाते रहते हो. इसे तो कहते हैं बच्चों की परवरिश बहुत इम्पोर्टेंट है, because you're making them a human being, and you're inculcating different habits in them and what they have and how you can modify them. How interesting. So basically it all tells from a simple test that if you have a self delay and you have a self control on yourself, you can be more successful. How fascinating is this? Okay, as you know, willpower is the master of aptitude. Without self-control, willpower, हिम्मत, courage के बगैर हो नहीं सकता. तो उसकी बेसिकली आपको ज़रूरत है, एंड बेसिकली और willpower is the master of everything that we will get in our lives, from the happiness and flourishing and other things, success or not, it all depends upon our willpower. So there's a complex interplay between generic disposition and environmental choices we make. Circumstances हर एक के डिफरेंट होते हैं, चीज़ें डिफरेंट होती हैं,
टारगेट एक होता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट और जो सारी चीज़ें होती हैं बाकी आपकी, वो आपके ऊपर जो इम्प्रेशन देती हैं, जो आप उसके बीच में आप चॉइसेस, बेस्ट चॉइसेस ऑप्ट करते हैं, वो डिफाइन करती हैं आपका फ्यूचर. And the interesting part is that Walter, with the help of some other technicians, with other techniques, you can change this habit. मकसद इस बुक का ये नहीं है कि बताने का कि जी अगर आप लो डिले है, आपके अंदर हाई डिले है, तो आप तो रह गए हैं या आप जीत गए हैं. नहीं, इस पूरी रिसर्च को आप पढ़ो और देखो, और उसके बाद उन्होंने जो ओवर द इयर्स देखा, तो वॉल्टर ने कहा विद लिटिल टेक्निक्स, आप जो बच्चा एक मार्शमैलो खा रहा था, इम्पल्सिव एक्शन शो कर रहा था, उसको आप चेंज कर सकते हो. विद लिटिल हैबिटल टेक्निक से आप अपनी चॉइस के अंदर भी आप हर चीज़ रोटेशन, यानी कि आप इम्प्रूव कर सकते हो अपनी लाइफ. हाउ इंटरेस्टिंग. यही है परवरिश. अगर आप अप्लाई करो अपने बच्चों से रिलेटेड, अगर आप अप्लाई करो किड्स के लिए, बड़ों के लिए, एवरीथिंग कम्स हेयर. दिस इज सो इंटरेस्टिंग एंड आई एम इन लव विद दिस व्हाट ही हैज सेड इट, एंड बिकॉज इट रियली मेक्स सेंस. अच्छा, अब ये है कि नाउ वॉल्टर ऑल्सो ट्राइज टू टेल अस दैट इट डजंट मैटर वेदर यू हैव अ सेल्फ कंट्रोल और नॉट. With these techniques, you can be successful. Means with little effort, everything is possible. Voila. So, you have good news. We have good news. So, I have some main points which I jotted down, just books related. अभी तो मैंने आपको छोटा सा उसका प्रीफेस बताया कि क्या था. अब आगे जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम अप्लाई करेंगे, एनालाइज करेंगे. हो सके तो पेपर पेंसिल पकड़ लें और अपने ये पॉइंट्स लिखते रहें कि अगर मैं ये करूँगी तो या करूँगा तो विल इट हेल्प और नॉट. ओके, नंबर 1 इज हॉट वर्सेस कूल. So, primary theme of this book is to see the book with 2 points. 2 point of views, that is hot versus cool. So the hot is the person with the impulsive thinkers, and they like, and these are those kids which ate the marshmallow first, and they had not waited for the second one or waited for 20 minutes. And these kids were not able to control themselves, and that's why they were, because, and it's not कि उनकी कोई गलती है, उन बच्चों की गलती नहीं है. द ओनली लिटिल टेक्निक जो अप्लाई कर रही थी कि उनको अपना जो फोकस था वो मार्शमैलो से हटाना चाहिए था. जो आपका फोकल पॉइंट था, जो आप फोकस कर रहे थे, वो मार्शमैलो, उससे आपको अटेंशन डाइवर्ट करनी चाहिए थी. That was the little mistake the impulsive kids did it. And the cool one, the cool side hai, and they were now called as rational thinkers, like the kids who waited for 20 minutes, being a child of nursery and waited to get waited and like they're tempted by the sweet, or obviously उसके ऊपर wait करना और फिर वो बच्चों की, and the best part what they observed was that they diverted their focus from the marshmallow, and they were able to control their desire of eating it. है, और इतने मजे की बात है, and they kept on reminding themselves कि 20 minutes के बाद मुझे 2 मिल जाएंगे. So therefore, if you divert your focus from the particular topic, think rationally and logically, and you will achieve. So we have to have a self-control. Self-control कैसे आएगा? विल पावर से. लेकिन इसको भी कोई स्टिमुलाई चाहिए. देखिए ना, आपको सेल्फ कंट्रोल ऐसे तो नहीं आ सकता. अब हमें वो सेल्फ कंट्रोल स्टिमुलाई चाहिए. अकॉर्डिंग टू वॉल्टर कि हमारे पास अब उसकी भी टेक्निक्स हैं. अब दूसरा पॉइंट, यू, दैट इज यू प्लस फ्यूचर यू, जो आप हैं अभी, और एक फ्यूचर आप, वो दोनों, ये एक्सपेरिमेंट है.
and there's a plus sign in between. Okay, so the experiment was that they brought people and they asked them to go into the machine that's called fMRI machine and एक्सरे मशीन होती है, उसके अंदर ब्रेन स्कैन होता है, उसके अंदर उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा कि अब आप अपने बारे में इमेजिन करें, थिंक अबाउट योर सेल्फ. तो वो ब्रेन का एक पर्टिकुलर एरिया एक्टिवेट हुआ. फिर उन्होंने कहा think about yourself, think about a person or a stranger. तो वो यानी कि स्ट्रेंजर है, उसके बारे में आप सोचें, तो ब्रेन का एक और एरिया एक्टिवेट हुआ. अब इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था? फिर आपने कहा कि आप 10 साल आगे अपने आप को इमेजिन करें. 10 इयर्स के बाद आप कहाँ होंगे? अगर 10 इयर्स के बाद अगर वो स्कैन के अंदर आ रहा है कि वो कह रहे हैं जी आप 10 इयर्स बाद इमेजिन योरसेल्फ आफ्टर 10 इयर्स वेयर यू आर. कुछ लोगों ने इमेजिन किया कि जी वॉट एवर यूर इमेजिनिंग, वो अगर स्ट्रेंजर एरिया, स्ट्रेंजर पैटर्न वाला एरिया जो पहले वाला स्ट्रेंजर वाला था वो एक्टिवेट हो रहा है, या वो एक्टिवेट हो रहा है जो आपका खुद का व्हेन यू थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ वो एरिया एक्टिवेट हो रहा है, या दोनों मर्ज एरियाज एक्टिवेट हो रहे हैं. बिकॉज दिस थिंग एक्सपेरिमेंट्स गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग. ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि व्हेन यू हैव सेल्फ पैटर्न अबाउट योर सेल्फ, व्हेन यू थिंक अबाउट योर सेल्फ 10 years ahead, और आपका सेल्फ पैटर्न यानी कि पीपल हु थिंक अबाउट देम सेल्फ एंड देयर सेल्फ पैटर्न इज एक्टिवेटेड इन द स्कैन, दैट मीन्स दे हैव अ गुड डीप pattern within themselves. They are more delayed, they have more delayed gratitude, and they're more connective within themselves, and that's why they're towards the cool side and they're rational thinkers. How interesting. Whereas जिन लोगों का जब उनको कहा गया कि आप अपने 10 years ahead का अपना फ्यूचर इमेजिन करें, तो उनका जो स्ट्रेंजर पैटर्न वाला एरिया ज़्यादा एक्टिवेट हुआ, या पूरा ही हुआ, या जो भी थोड़ा बहुत हुआ, तो उसका यानी कि ज़्यादा ये खाली जैसे स्ट्रेंजर पैटर्न ही हुआ है और मिक्स नहीं हुआ हुआ, मर्ज नहीं हुआ हुआ सेल्फ पैटर्न के साथ. तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि दोज पीपल दे हैव they have less connection with themselves. It tells so much about it that you don't know what future you are foreseeing yourself. कितनी बड़ी बात है, and which can lead you to be more impulsive and hot-headed, and that's the hot side, and you want immediate gains. कितनी छोटी सी एक आदत से, कितनी छोटी सी हैबिट से आप कितना कुछ रिसर्च में आप पता लगा सकते हो, और अपने आप को आप चाहो तो रिफाइन कर सकते हो, एंड यू कैन मेक योर लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड मोर सक्सेसफुल. सो ऑब्वियसली इसको सेल्फ मास्टरी, और अगर आपके जितना ज़्यादा आपका आपस में कनेक्शन होगा, आप अपने आप को जानते होंगे, आपके लिए आपका सक्सेस रेट टू अचीव योर गोल विल बी मच बेटर देन द वन, बिकॉज यू आर बीइंग मोर रियलिस्टिक एंड योर अप्रोच इज रियलिस्टिक. लेकिन इन सब के लिए लेट्स से अगर आपका नहीं है, आपका स्ट्रेंजर पैटर्न है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का स्ट्रेंजर पैटर्न है और वो एक्टिवेट हुआ है, देखो ना, जिसका कनेक्शन हो गया, दैट मीन्स दैट पर्सन ऑन द राइट ट्रैक. जिसका स्ट्रेंजर पैटर्न एक्टिवेट हुआ है when he or she was thinking about her own self ahead 10 years, तो उसके अंदर आप ये कर सकते हो, with your willpower, with little techniques, you can improve and you can also achieve success. So basically जो वॉल्टर मिशेल कह रहे हैं कि whether or not the individual thinks that the willpower will energize him or herself or deplete them, therefore according
to Michelle, we should train our minds to think that to do hard work and strenuous exercise will energize me. You have to think this, and it will as what you think you will become. Whatever you're going to think you will become. लेकिन उसके अंदर आपने ये ज़रूर डालना है, you have to train your mind कि to do hard work and strenuous exercise will energize you. So obviously इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप 24 घंटे हार्ड वर्क करते रहें. You need to oscillate and then you have to charge up again and you need to work. But it is to tell you that कि ये अपने माइंड को ट्रेन करना है इस तरीके से. ये एक्सरसाइज अगर आप करते रह रहे हैं कि yes I'm like physically active, yes I can do it, I can do this today, I'm feeling really energized, I'm going to do this work, you'll see you can have I think much more productive day than the one जिसके अंदर आप सोचते रह जाएं और आपका कुछ ना हो सके. Whereas अच्छा अब इसका एक और भी है. Check in and see what your thought process is. Because as if you see yourself overworked with this technique, that means you'll be as if you see yourself energized with this technique. Because अगर आप ओवरवर्कड हो रहे हो तो इसका मतलब है आप अभी सही तरह कनेक्शन नहीं बिल्टअप हो रहा आपका, और उसके लिए आपको तरीका क्या करना पड़ेगा. यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग. रीथिंकिंग पॉजिटिव थिंग्स will overcome all the obstacles. So you have to be very positive about it, whatever the thing or the work you're doing, and you feel yourself energized कि yes I can do it. मैं करूँगा, आज मैंने अपना काम सारे टास्क कंप्लीट करने हैं. I can do it. Yes, I can do it. Do it. आपके हार्ड वर्क तो है, but thinking over this, yes, I can do it. Yes, I have the energy to do it. I have the energy to do it. It's gonna work wonders. So एक तो ये. अच्छा अब आखिरी नहीं, second last. That is if then. That is if you know your hot spots. देखो अपने आप को सेल्फ मास्टरी कैसे कर सकते हैं. You should know your hot spots, यानी कि things which triggers you, जो आपको गुस्सा दिलाती हैं, वो चीज़ें जो आप जिससे you're not proud of, कि आपकी ये हैबिट्स हैं जो आपको नहीं पसंद है, बाद में आप रिपेंटेंस करते हो, वो आपके हर जगह आगे आ जाती हैं ऑब्स्टिकल्स में. तो वो क्या चीज़ें हैं, तो आप थिंक ऑफ वन थिंग you want to change or what do you and you're not proud of. Think of any bad habit, anything or impulsive or bad habit which you want to change, or bad reaction the way you give, you want to change, that triggers you and triggers your impulsiveness, and then you repent afterwards. Because usually हम इंसान है भाई, हम ऐसे हो सकता है, हम ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचो, क्या चीज़ आपको हॉट स्पॉट है जो आपको ट्रिगर कर रहा है, जिस पे आप नहीं कंट्रोल कर सकते, तो उसका तरीका क्या है, उसको अप्लाई कैसे क्या करना है. उसका तरीका बड़ा सिंपल बताना. उन्होंने कहा अपने दिमाग में उसी सिचुएशन को लाएं जिससे आप डरते हैं, जिससे आप भागते हैं, उस सिचुएशन को लाएं और उसको इमेजिन करें, और उस पर आप सोचें आप कैसे रिएक्ट करेंगे, और उसको बारी बारी अपने माइंड के अंदर इमेजिन इट, think about it and how you reacted, and make your reaction more refined and more realistic, more practical one. So this is the way you don't have to encounter the wrong things, और आप अपनी गलत हैबिट्स, बैड हैबिट्स को भी पॉजिटिव साइड पे लेके जा सकते हो. So and if you know how to respond in that situation, so you will not run from that situation, and secondly you will be prepared and you will be more more rational thinker, and बड़ा logically आप उसको deal करेंगे, and I think it can give you and make you do more right decisions rather than the impulsive ones. So that will be the antidote of that, कि आपकी वो जो आपके जो इम्पल्सिवनेस और जो
हॉट आपकी साइड है, उसको कंट्रोल करने का एंटीटोड जो आपके ट्रिगर का है वो ये है। उस ट्रिगर को आपने इतना दिमाग में अपना प्ले अराउंड करना है, आपने सोचना है वही सिचुएशन को बारी बारी, और आपने कहना है हाउ आई एम गोइंग टू रिएक्ट दिस टाइम, इफ दिस हैपेंस हाउ आई एम गोइंग टू रिएक्ट दिस, how, and if someone says this, what I'm going to say that. You have to be prepared, and if that situation comes, you have an encounter, you will perform much better. And you see yourself doing it in your mind, so this way you will achieve self-control, and therefore stimulus to your self-control is an antidote. Voila. अच्छा, ये तो हमें पता चल गया जी, आपने सेल्फ कंट्रोल करना है, हमने विल पावर से करना है, हमने अपनी पूरी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है और किस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर होना है। लेकिन एक चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है चॉइस। यस, वी शुड हैव अ चॉइस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अब कभी आपका दिल नहीं चाहता, अब इस बुक में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिलेड इफेक्ट वाला वही सक्सेसफुल होगा, नहीं, बट द चॉइस यू मेक दैट डिपेंड्स अपॉन इट। If sometimes you don't want to wait for 20 minutes, you want to eat that marshmallow on that spot. Yes, you can, but it should be your thinking, it should be your decision, not the other people's decision. It should not be in other person's hand to control your aptitude, your emotions, your desires. Everything will be controlled by yourself. So you'll be like, okay, yeah, I want to have it today, I don't want to wait, I want to be like this. You can be. If you want to be impulsive, yes, today I want to be, I want to react on it, yes, you can, but that decision should be your own, and you should be more practical and more logically. So I think it's going to be an amazing book for you. I hope you like this book, because I loved this book, and it just taught me a lot of things. I hope you also apply it and see, and please let me know what kind of triggering things which you don't like, or any bad habit you don't like, for that you want to change it. I hope it'll be a good help for you. Thank you for watching. Take care. Bye bye.